this course. In this video, we will learn about how many. So the contents for today's video are introduction, character typing, conversation and vocabulary. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम how many and how much के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों नॉर्मली हम एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं how much money and how many books. How much and how many. How much हम ज़्यादातर पैसों के लिए इस्तेमाल करते हैं how much money and how many books. How much तो how much के लिए हम चाइनीज में इस्तेमाल करते हैं 多少多少 how much money 多少 चेन को हम कहते हैं मनी को हम कहते हैं चेन how much money 多少钱 या how many के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी how many books के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शू how many books यहाँ पे हम शू नहीं कह सकते क्यों क्योंकि बुक्स के लिए एक क्लासिफायर वर्ड इस्तेमाल होता है बन शू अभी ठीक है शू बुक्स के लिए क्लासिफायर वर्ड इस्तेमाल होता है बन शू अगर इस सेंटेंस में ये बन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शू इसका मतलब ठीक नहीं आएगा शू या फॉर एग्जांपल हम क्लोथ्स का एग्जांपल लेते हैं क्लोथ्स को हम चाइनीज में ईफू कहते हैं ईफू तो यहाँ पे क्लोथ्स का एग्जांपल भी इस तरह ईफू ये सही नहीं है इसके लिए क्लासिफायर वर्ड है जियन ईफू या फिर हम आते हैं पिन के लिए पिन को कहते हैं बी तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं ये भी सही है इसके लिए अपना एक क्लासिफायर वर्ड है बी 多少 how much money 多少钱 how many books 几本书 how many clothes 几件衣服 how many pens how many pens 几支笔 classifier for pen ये classifier for clothes और ये pen classifier for books. How much money 多少钱 How many books 几本书 इस जी का मतलब है how many
几本书几件衣服 how many clothes 几件衣服 for example आपसे कोई पूछे कि आपने कितने कपड़े पहने हैं तो for example I'll give you the example 1 and 2 er 两件两को असल में两件 means two अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में हमने नंबर्स पढ़े थे लेकिन वहां पे 2 को हमने कहा था r अगर ये 2 नंबर की तरह इस्तेमाल होता हो तो इसको r कहते हैं अगर ये काउंटिंग में इस्तेमाल होता है तो फिर इसको ल्याम कहते हैं ल्याम फॉर एग्जांपल मैंने 2 शर्ट्स पहने हैं तो मैं इसको इस तरह नहीं कह सकता अर्जेन ईफू ये सही नहीं है ग्रामेटिकली सही नहीं है अर्जेन ईफू सही नहीं है इसको हम सही तरीके से बोलेंगे ल्याम जेन ईफू फॉर एग्जांपल किताब का एग्जांपल लेते हैं ल्याम बन शू या फिर हम पेन का इस्तेमाल लेते हैं 两支笔多少钱几本书几件衣服几支笔两件衣服两本书两支笔तो आते हैं कन्वर्सेशन सेशन में 你好你要多少钱你好，我要2块钱。你要几本书？我要一本书你要几支笔我要一支笔。तो आते हैं दोस्तों आज के वोकैबुलरी सेशन में 多少 how much 多少 钱 means money 天 means day 几 means how many 几 Ben is a classifier word used for books. Ben Shu means book. Shu Jian classifier word used for clothes. Jian Yifu means clothes. Zhi classifier word used for pen. B means pen. This channel is actually for learning basic Chinese and preparation for HSK levels. If you are a beginner and want to learn Chinese for free, so please join us by subscribing to our channel and don't forget to press the bell icon that you won't miss any updates in the future.